Okay guys, so I'm back with another video. I hope you are liking the series, and for a change, because some people are saying that CSE 2025 is around the corner. So give us some question from 2024. Especially there is a demand for some arbitrary question that they keep asking in terms of environment. Like one of my friends who commented that please provide some content regarding environment. So here I am with a very out of blue question, and the basic intention behind this series is to make you comfortable with unpredictable nature of UPSC. Okay, so let me tell you, 1 month and 15 days from now on, there will be another bouncer. Okay, they will start asking you about another random organism or some features of that organism. ठीक है ना, there will be some features of that organism. Okay, let me make it more darker. Okay, so and they will expect you to answer it. So the trick is not to search and go after this kind of vague organism, or be it vague properties. Like they have asked like certain things. I remember in 2023 also, there is some species which shows certain traits, like they will dance in a certain way, they will exhibit certain properties to attract certain kind of beings, so they have this utility in environment. So there can be a number of things they can ask about species. Since the merger of Indian Forest Service with the civil services examination, I think 20 to 30% questions comes from environment, and out of that 20 to 30 question, there will be 5 questions which you have never heard of, and that will be regarding the species. So you have done your basics, like reading Sankar IS, PMF IS, environment basic books. So that much is enough as a building block. But after that you have to bring in the common sense. Okay, a person who is environmentally or ecologically aware, rather than who has mugged up all species. Even if you have read encyclopedic content about certain species, like honeybee, like wasp, but they will come up with certain things that you have not read about that thing. So the trick is to apply your common sense in that question and how to approach that thing. So here I will be telling you, like whenever you find such questions, don't panic. You can apply every word, single word, like cicada, frog hopper, pond skater. Every question has some clue. ठीक है ना? And like 7 videos I have posted till now. Every video has certain learnings. Okay, and each learning need to be connected with the other to have a wholesome view. So I'm not giving you a PDF where 1 point, 2 point, 3 point you mug it and solve it. I'm telling you, I'm teaching you, and I'm moving with you in a real exam time, step by step. Just I'm explaining at different step, so that you feel comfortable with this idea, so that you understand and grasp the science behind it. ठीक है ना? And come up with the logical conclusion, right? So let's move. So whenever we see question, we have to pick out the keywords, the organism. Okay, the organism, cicada, frog hopper, pond skater are.
Okay, so we have no clue at all. ठीक है ना, what is cicada, frog hopper, pond skater, we can't go about. There are like billions if not trillions of species there. You cannot expect to remember each one of them. ठीक है ना, bird has its own classification, fish has its own classification, insect has its own classification. This is humanly impossible to know about it. Okay, so we don't have to fall into trap of chasing n number of materials to cover. So after this kind of question, the knee jerk reaction is to go and search for the compilation. ठीक है ना, compilation of all such species, then next year they will come up with something. So it's always like you are chasing sun. The more you feel that you are getting close, the more far away it feels. So we have to understand the actual right approach to tackle or to attack such kind of question. ठीक है, so without a further ado, let's move and let me demonstrate it. So here we are, the organism cicada, frog hopper and pond skater. So we have no clue. Okay, so we can see this word they can choose n number of abstract word, but UPSC want you to award marks. At least they want IFS guide to correct it, because their cutoff will be always 15 to 20 marks higher. So they want you to crack it. They are giving you nuggets, certain nuggets. You pick that nuggets and you make a wholesome picture out of it. They want you, they are pieces, and they want you to collect it and make it wholesome picture. So that's why they are giving you names which, being as vague as anything can get, still it has some clue. You have to decipher that clue, and I am here to teach you how to decipher it. And for that you have to see other videos also, because there will be some cross learning. Okay, if you don't watch other videos and stick to it, have patience and stick to it, there will be no use. It's not like one video you watch and then you just get on with something else. It's like a book, okay, where you have to read one after two after three and all. Okay, so do subscribe it will be very useful for you. Okay, so coming back, so frog hopper means there is a frog and there is a hopper. It feels like there is some entity which is X, which is hopping from one frog to another. It feels like, na, we can assume that much if we don't know anything about this species. It is like hopping from one thing to another to another. So if you think this way, what are the other options which can make sense if you just have this assumption? Bird, yes, it can be like one bird we have seen, small bird, it hop from buffalo and all kind of thing. So but still, like frog is a very small entity. I have not seen it. Generally birds are bigger than frog. So it's hopping from buffalo and cow to cow makes sense. But still, चलो मतलब पूरी तरीके से तो हम वी आर ऑन इट. सो इसमें किसको हटाते हैं? फ्रॉग हॉपर रेप्टाइल तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि रेप्टाइल जो है वो कभी भी, एक फ्रॉग अपने आप में एक रेप्टाइल है, उसके ऊपर एक रेप्टाइल कैसे हॉप करेगा? हॉप मीन्स लाइक थोड़ा एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, ऐसा है. सो डजंट मेक सेंस कि रेप्टाइल खुद के ऊपर एक रेप्टाइल हॉप करे. ठीक है ना. सो रेप्टाइल आई थिंक इसको हम हटा सकते हैं फ्रॉम फ्रॉग हॉपर. सो द ट्रिक इज़, हर क्वेश्चन जो समरी मैं देना चाहूँगा, एक अच्छे से डिटेल समरी मैं बाद में दूंगा. एक एक, जैसे किकेडा इज़ वन क्लू, फ्रॉग हॉपर इज़ अनदर क्लू एंड पॉन्ड स्केटर इज़ अनदर क्लू. और यहाँ 4 उसके एजेंट हैं. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा, एनी ऑफ दिस ऑप्शन विच अपील्स टू आइदर ए और बी और सी. इससे काम नहीं चलेगा, और नहीं होना होगा.
ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तीनों स्पीसीज़ एक ही एंटिटी से है ना, ठीक है। तो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन जो ये तीनों स्पीसीज़ को टिक कर रहा हो, ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्जेंस हो, ए प्लस बी प्लस सी। सो वी हैव टू फाइंड दैट काइंड ऑफ, अगेन आई एम सीइंग यू कि सी सेट जी एस में भी हैं, ठीक है ना। देयर इज़ ए किकेडा, देयर इज़ अ बी फ्रॉग हॉपर एंड देन देयर इज़ अ सी पॉन्ड स्कैटर। सो ये तीनों का कन्वर्जेंस होना चाहिए ये में से किसी एक ऑप्शन में से। अगर हम ये कर पाते हैं देन वेल एंड गुड, ठीक है ना, तो हमारा आंसर मिल गया। सो ऐसे कुछ भी रैंडम स्पीसीज़ दिखे, बी इट इन यूपीएससी क्वेश्चन, बी इट इन एनी एग्जाम्स, दे विल आस्क सम रैंडम क्वेश्चन, वी डोंट हैव टू लोअर आवर गार्ड एंड मूव अहेड, ठीक है ना। यार ये तो होना नहीं है, या फिर कुछ पैनिक में मार दिए, कुछ नीजक रिएक्शन आएगा हमारा, ठीक है, और उसमें हमको कुछ किसी की तरफ ज़्यादा रुझान आ गया, हम एक मार के चले गए, ठीक है ना। वी डोंट अप्लाई द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग दैट आई एम टीचिंग यू, और वो मैं आई एम टेकिंग पेन टू एक्सप्लेन इट इन टू 15 to 20 minutes single thing. If you do it consistently then you are able to decode it in 55 seconds, ठीक है ना, trust me. So for that you have to stick to this channel, watch other videos, keep watching it, ठीक है ना। and while you watch it you keep your thinking cap on कि अभी हम क्या करेंगे आगे. It should be fun, right guys? It should be fun, interesting, okay? It should be fun and interesting. So let make it more interesting rather than being scary, ठीक है। So अब फ्रॉग हॉपर हमने देखा, उसके हिसाब से मैं ना रेप्टाइल में इशू आ रहा है, रेप्टाइल में हमें इशू आ रहा है फ्रॉग हॉपर के, कि एक रेप्टाइल के ऊपर एक रेप्टाइल हॉप करता हुआ, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके हिसाब से फ्रॉग हॉपर में, फ़िश में भी इशू आ रहा है, क्योंकि फ्रॉग हॉपर ऐसा लग रहा है कि फ्रॉग है उसके ऊपर कोई हॉप कर रहा है, फ़िश हॉप करेगा क्या, मतलब थोड़ा टच उच हो सकता है। तो फ़िश एंड बर्ड बोथ आर सस्पिशियस, ठीक है ना, मतलब हम बीच बीच के फंसे हुए हैं। इंसेक्ट हो सकता है, एक इंसेक्ट यहाँ है, छोटे छोटे मक्खी टाइप जो होते हैं, वास्प टाइप, क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है ना, इट्स जस्ट अजम्पशन, ठीक है ना, वी डोंट नो कि क्या होगा। लेकिन यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू थिंक अलॉन्ग दिस लाइन, अदरवाइज वो इतना रैंडम कुछ नाम दे देगा, किकेडा है, कुछ डेलेक्सियोलो हो करके दे देगा नाम, कुछ पेपियोनिया कुछ करके फिक्टियस नाम दे, ऐसा नाम दे देगा कि आप कर ही नहीं सकते। तो वो एक क्वेश्चन अपना बर्बाद नहीं करना चाहता है, दे आर जस्ट फनलिंग, ठीक है ना, एंड द डीपर यू गो द फनल विल बिकम वेरी नैरो, और यहाँ पर आईएफएस वाले बंदे निकलेंगे, और एक कुछ होते हैं बड़े वाले सोर्स। तो इन अ वे आई एम टीचिंग यू व्हाट द यूपीएससी एग्जामिनर डज, वो है ना एक लेयर के नीचे चले जाते हैं। तो ये ऊपर वाले लेयर हो गए बेसिक 20-30 क्वेश्चन, लो हैंगिंग, जो सारे कर लेते हैं। फिर ये एक लेयर होगा जो थोड़ा और मॉडरेट लेवल, और ये फ़नल, और ये जो छोटा होगा वो फ़नल की तरह, आप जान रहे हो ना, एकदम नीचे आकर के ये और ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ दैट, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, छांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक क्लू देते हैं कि आप भाई इसको समझो और इससे है ना निकालने की कोशिश करो, थोड़ा अप्लाई ज़्यादा करो। और ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा वाइल टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन कि देयर इज़ अ मेथड इन यूपीएससी मैडनेस एंड दे आर योर बिगेस्ट अलाई, दे आर नॉट एनिमी। वो चाहते हैं कि आप है ना सॉल्व करो, सही करो, ठीक है ना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। यहाँ अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, दैट इज़ द मिथ दैट आई वांट टू ब्रेक, और उसको आपको समझना है, ठीक है। सो लेट्स मूव, पॉन्ड स्केटर आ गया। अब यहाँ पर भी हम क्या पहुँचे, फ्रॉग हॉपर से क्या पहुँचे कि ये रेप्टाइल को तो हमने डिस्टिंक्टली डेफिनेटली नो की तरफ हटाया होगा। एक फंडा मैंने बताया डेफिनेटली नो यस का, आप लास्ट वीडियो चेक करना, ठीक है ना, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में जो हिस्ट्री के अनसॉल्वेबल है उस पर भी मैंने ये डील किया है, यू हैव टू गो बैक दैट थिंग। और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो देखना और उसके बाद बताना कि आपको दोनों मिक्स होकर के कैसा हो रहा है। होलसम जो मैं बोला, नगेट्स के अंदर नगेट्स, ठीक है ना, लेयर्ड मल्टी लेयर्ड अप्रोच, ठीक है। तो फ्रॉग हॉपर है, तो यहाँ पर हमने क्या हटाया, हमने हटाया रेप्टाइल को, डेफिनेट नो बोला, और ये मे बी है, हो सकता है। अभी और हम ढूंढते हैं पॉन्ड स्केटर। पॉन्ड स्केटर, यू अंडरस्टैंड, देयर इज़ अ पॉन्ड एंड स्केटिंग क्या होता है, हमारे पैर के नीचे स्केट होता है ना, हम स्केटिंग करते हैं बहुत लोग, बच्चे लोग, ठीक है ना, बड़े लोग, वो क्या होता है, कोई एक पर्सन है
उसने अपने जूते में ना स्केट कर लिए लगा पहना हुआ, और वो स्केट किया जा रहा है ऐसे ऐसे। स्केटिंग क्या होता है, कोई एक सरफेस होगा और उससे ना मूव कर रहे हैं एक सिल्की वे में। सो स्केटिंग गिव यू द फील कि समथिंग इज़ मूविंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज़ द अंडरनीथ सरफेस एंड मूविंग हो रहा है। अब अगर ये देखो, फिश हो सकता है स्केट कर सकता है क्या? फिश को पानी चाहिए, पॉन्ड के अंदर स्केटिंग मज़ा नहीं है। बर्ड तो आप डेफिनेट हटा सकते हो, यहाँ पर गेम चेंजर। फूड हॉपर में अगर कुछ आपको लग रहा भी होगा डाउट कि भाई हो सकता है कहीं हॉप कर ले, छोटी चिड़िया ऐसे हॉप कर ले, आई थिंक स्केटिंग के बाद तो कॉमन हो जाना चाहिए। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी रॉकेट साइंटिस्ट, एक जनरल आदमी भी है, एक जनरल अवेयर वाला, ठीक है ना। एंड दिस क्वेश्चन आई थिंक 99% ऑफ द पीपल डिडंट गेट इट राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। और मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये स्केटिंग जो है, ये तो बर्ड तो स्कर्ट नहीं करेगा, बर्ड को स्केट करते देखा क्या, वो थोड़ा सा होना चाहिए ऐसे। तो बर्ड आप हटा सकते हो यहाँ से, एक डेफिनेट आया। अब फिश और इंसेक्ट बचा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि ए के बारे में कुछ नहीं पता, ये वर्ड भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि केड़ा, मतलब बोले तो जैसे इंग्लिश के वर्ड हैं हॉपर, यहाँ एक दिखा। तो हमारे जो क्लू हैं, लेट्स गेट बैक टू द क्लू। ए क्लू है, बी क्लू है, सी क्लू है। बी के अंदर भी एक क्लू छुपा हुआ था, हॉपर। हॉपर मीन्स एनीथिंग विच हॉप्स, ठीक है ना। स्केटर मीन्स एनीथिंग विच स्केट्स, ठीक है। जब भी कोई नेमिंग करते हैं 90% ऑफ द टाइम्स वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसके चीज़ों को, उसी के बेसिस पे नेमिंग करते हैं। अब फ्लाई करने वाले को तो स्केट करने वाला नहीं करेंगे ना, जो स्केट करता है वो फ्लाई तो करता नहीं है। तो वी हैव टू अज्यूम द रेशनैलिटी एंड प्रिडिक्टेबलनेस नेचर ऑफ द क्वेश्चन। वो ऐसा नहीं होगा, दीज आर नॉट सैडिस्टिक पीपल, ठीक है। वो दिखेंगे ऑन सरफेस पर सैडिस्टिक दिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, दे आर मेकिंग आवर लाइफ हेल, बट दे आर नॉट सैडिस्टिक पीपल। दे आर समवन हु इज़ जस्ट गिविंग यू अ वेरी लेयर ऑफ सैडिज्म, और उसके बीच में आपको अनकवर करना रहता है। एंड दैट रिक्वायर्स you to analyze this question threadbare before the exam, so that in the exam hall you understand कि ये तो अलाई ही है, अब इसमें हम ढूंढने का काम करते हैं। सो ये टेम्परामेंट जो होता है पहले आपको बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड मोर यू सी द वीडियोज़, ठीक है ना, मोर योर टेम्परामेंट विल गेट डेवलप। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो if you have reached till now, and unless you back it with the other videos that is in the playlist of this channel. So do watch it to get a wholesome feel, ठीक है ना। It will start making more sense as you proceed further. So अब ये पॉन्ड स्केटर है, आप सोचो एक पॉन्ड स्केटर है और एक हॉप कर रहा है, कीकेड़ा को हम हटा देते हैं, ये कोई क्लू नहीं दे रहा है। अब ये दो जो चीज़ें हैं, अब हमारे पास है एक फिश और एक है इंसेक्ट। किस में ये दोनों बैठ रहा है, वेयर इट मेक मोर सेंस। फिश हॉप भी कर रहा है, यहाँ भी इशू हो रहा है, फिश स्केट भी कर रहा है, स्विम करता है, स्केट। पर इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट इतने ना माइक्रो लेवल पर होते हैं, इतने मिनी क्रिएचर होते हैं, दे आर सच अ माइक्रो क्रिएचर इंसेक्ट। और उसमें कितने वैरायटी हैं, वो एक इंसेक्ट हो सकता है कि यार वो है ना फ्रॉग पर है, वो ऐसे देखते होगे आप कितने अपने लाइफ में कि बहुत सारे फ्रॉग के ऊपर है ना बैठे रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे फ्रॉग होते हैं, उस पर ना बहुत सारे इंसेक्ट बैठे रहते हैं, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन भी हो सकता है, गॉड नोज क्या है इनका। सो ऐसे ये अजम्पशन लेना कि वो इंसेक्ट है, डैट इज़ फार मोर डाइजेस्टेबल, कि वो फ्रॉग है उस पर एक इंसेक्ट होगा और वो मूव कर रहा होगा। हमने रियल लाइफ में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये होगा। और वही हमारे जो पॉन्ड के जो बॉटम लेवल होते हैं उस पर भी बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। फिश आर जनरली एट द टॉप लेवल और मिडिल लेवल। जनरली पॉन्ड के एकदम बॉटम मोस्ट जो स्केटिंग के लिए आपको एक सरफेस से टच चाहिए, स्केटिंग के लिए आपको एक सरफेस से टच चाहिए, वो इंसेक्ट में हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फिश, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, एंड आफ्टर मैचिंग विथ ऑल दोज नगेट्स, ठीक है, आपको एक फील आता है, ठीक है, कि एक होलसम पिक्चर क्रिएट होती है। और वो पिक्चर हमारी इंसेक्ट की ज़्यादा बन रही है एज़ कम्पेयर टू
एज़ कम्पेयर टू फिश, फिश की थोड़ी सी बन रही है। और रेप्टाइल हमने एक से ही डेफिनेट नो में ले गया, डेफिनेट नो डेफिनेट यस कैसे एक अप्रोच के तौर पे यूज़ होता है, कैसे एक बेस बनाता है टू प्रोसीड फर्दर, जिसको मैंने बहुत ही लैबोरेटरी डील किया है प्रीवियस वीडियोस में। तो गो चेक आउट दोज वीडियोस, ठीक है ना। प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, आप उसको देखो पूरा, तो ही फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट वन थिंग दैट यू वन ऑफ आप देखते हो आगे जाते हो। तो और हमने बर्ड को भी साइड किया पॉन्ड स्केटर के एंगल से। फिश इंसेक्ट में बचा। इंसेक्ट जो है ज़्यादा बड़ा पिक्चर क्लियर कर रहा है, वो ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, ये है। तो समरी में आई हैव लेट यू नो कि ये राइट आंसर होगा, हाउ इंसेक्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा और डेफिनेट होगा। आप अगर ये पहुंच जाओगे तो आपको है ना आंसर की देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आपने समझ गया कि आपके फंडे स्ट्रॉन्ग थे, ये हो गया। सो इसलिए मैंने 20 मिनट में समझाया इसको। पर द पॉइंट इज़, अगर मेरी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं ऐसे अप्रोच करूँगा इन 45 सेकेंड्स। दिस इज़ किकेडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर। ओके, किकेडा आई हैव नथिंग क्लू। फ्रॉग हॉपर, देयर इज़ अ फ्रॉग एंड देयर इज़ समथिंग हॉपिंग, ठीक है ना। पॉन्ड स्केटर मीन्स पॉन्ड एंड देयर इज़ समथिंग स्केटिंग, ठीक है। अब बर्ड कांट बी स्केटर, हटा सकते हैं। हॉपर भी बहुत चांस कम है। फिश कांट बी द फ्रॉग हॉपर, इसको भी हटा सकते हैं। रेप्टाइल देयर इज़ नो चांस, ठीक है। एक तो फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर हॉप करना, फ्रॉग खुद रेप्टाइल है, रेप्टाइल के ऊपर रेप्टाइल, दिस इज़ बुलशिट, ठीक है। तो ये ज़्यादा चांस लग रहा है। बस व्हाट डज़ इट टेक, 30 सेकेंड्स, and if you do it, apply it in 300 questions of previous year, and if you find that 90% of the time I am getting right, so next attempt 2025 or any attempt or any exam, be it BPSC, UPPCS, JPSC, or any exam, be it geoscientist, CAPF, any exam, you can just move ahead and tick it, ठीक है ना, like a pro, and you will be getting right. So they are playing with your insecurity because you have not delved into it deeper, ठीक है। One day I will make a video where I will create a parallel thing, like from 1991 I will make a compilation of 1991 to 2024, where I will show कि how this genre of question is being solved this. So similarly for other exam, if you people like and if you keep supporting and encouraging and if you are really getting benefit, then I will make it for other exams also, ठीक है ना। you shoot me that question that I want you to, that you want me to solve, and I will solve it because I have mastered it, and somehow I am very good at finding pattern. That's why I am able to see that pattern which most people are not able to do it, and that's why it helped me cracking prelims multiple times, ठीक है ना, with a margin of more than 25 marks. So I want you to teach that pattern. Like AI does what? It is finding pattern, but they are finding pattern with data which is far more mechanical, which is far more structured. I am trying to teach you to find pattern in art subjects like this, because I feel that there is underlying science, and since being a engineer I am able to find that pattern and I can apply it in, be it human emotion, be it interpersonal relation, be it outside world, be it geopolitics, be it whatnot. So this is just a nugget to open your eyes towards all kinds of possibilities. So I am here to teach you. So stick with me, subscribe, like and share the word. The more it will go, the more it will encourage, ठीक है ना। So do let me know in the comment section what you want, and be optimist, okay। If you are questioning the validity of this, then tell me what are the other options. Just tell me. If anybody question this, if any guy come and question, no, this is not foolproof, then what is the other foolproof? Go and mug up millions and billions of species. Is this the option that we have? Okay, so this is the best possible things, okay। So I'm signing off with this. I will come up with different genre of question and I will show you how to apply it. So do a vote what topic next you want me to
make, and I will go by that. Okay, till now I'm continuing with the series. Do like and subscribe, people, and keep sharing. It will be of great help. Okay, so that you develop a holistic thinker. This every questions is also a nugget which you want to weave into a full picture. Okay, so that's it for this video. I will be back with another video. Till then, have a good day. Bye bye.